Good evening, everyone. So just clear my voice is clear and the screen is visible, right? Just give me a confirmation so that we can proceed with the session. Yeah. All right, so let us begin with the session, and the task which was allotted to you was page number 1 to page number 30. Okay, so it means more or less we would be able to deal till here. Fine. So let us begin, and now most of the important sections we would be looking into is the UN, then G20. Some of the international organizations are there, and what are the recent updates on the same we would be glancing that. Followed by we would be having the look over the some more recent bodies. Okay, like for example, IAEA was asked in 2018 and might be 19 prelims as well. So we would be having the look over that. What are the new amendments, something recent updates, any country have joined or any country have skipped any organization or something like this, right? So now let us begin with the discussion. See, first of all, UN and headquarter is in New York. Just remember the year 1945. What are the principal organs? Okay, so General Assembly, Security Council, ICJ, Secretariat, Trusteeship Council, and ECOSOC. Okay, this is the ECOSOC. Now, if I ask you ICC, ICC is the organ of UN? No. Okay, ICC is not the organ. Where is the headquarter of ICJ? Where is the headquarter of ICJ? Those of you who can't speak or something, so what you can do is you can use the very latest comment box of the contemplation as to drop your comments. All right. Now, please let me know the headquarter. Hague, Netherlands. Okay, Hague, Netherlands. Now, if we talk about this UNESCO, where is the headquarter of UNESCO? Paris, France. Specialized Agency of UN, again 1945. Then the most important report. Though there are so many reports, but this one is most important. This one. Global Education Monitoring Report. This is most important. So just have a tab over this. Rest, if you want to read, you can. But things are not that important. बहुत कुछ होता रहता है पूरे साल में, तो अब हर कुछ नहीं पढ़ा जा सकता. And also that is not important. Okay. Now next we have is the UNHRC. Now in UNHRC you should know some of the rights are there, which are given for the human and human protection and to improve their life quality of life. They are provided with certain rights. Now UNHRC again headquarter and the location and the year. These 2-3 things are most important, right? Then we have UN peacekeeping. So UN peacekeeping forces are there, and in that what you can remember is the Shakti Devi. Okay, this one is important. Corps Shakti Devi of J&K police deployed in Afghanistan, and since Afghanistan was in news last year so much regarding the Taliban issue, so you should remember this one. Now if we talk about the escape, there is one report which was launched by this UNESCO. Okay, now you need not to remember these commissions. What are the commissions? Then again you can skip these things. These are not at all important. The agenda is just to have a grip that how you have to carry for the next 20 or 25 days, how you can revise your PT 365, because each and everything is not important. You have to be very selective at this point of time. Okay. Now, we have statistical commission. So when these commissions are there, you have to just know, okay, India is the part, India is it has been elected. Then the term is 4 years and headquarter New York. These 2-3 points are more than sufficient. Okay. Now comes the UNCTAD.
Now, if we talk about UNCTAD, this is important. Okay, even World Investment Report is asked by UPSC. Rest of the reports are not asked till date, but in case, so you can just have a look. But these two are essential. These two, Trade and Development Report, World Investment Report. These two reports are important. Fine. Now you need not to remember where is the headquarter, when it was established or something like that. You can skip very well. Then comes the FAO. Now, when we talk about FAO, there are 2-3 things. First of all, this is a report, State of Food and Agriculture. Since food is there, तो definitely WEF नहीं निकालेगा, ILO नहीं निकालेगा, World Bank नहीं निकालेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि food से associated होगा. Isn't it? Like, no, you have to just use your intelligence that time to just answer the things. Okay, so State of Food and Agriculture, 1945. Once again, we can see like, no, most of the bodies were formed in 1945. Then Rome, Italy is the headquarter. This Codex Alimentarius Commission, most of you have read about it in the the mains classes, but for prelims, that's only important. Ki what do you understand by Codex Alimentarius? Okay, this is important. Fine. Now coming to coffee organization, not important. You can be selective while reading. L69. L69 grouping is for reform in UNSC, State Security Council. Okay. And India is leading country. Yes, India is. L69 grouping, they can ask you like L69 was in news, is recently, like no, in recently it is related to what? So it is related to the reforms in UNSC. Is India a country of L69? Yes, India is. Now coming to G20, Vasudev Kutumbakam means one family, one future, one up. Global Biofuel Alliance. So in this you should know the 4 stages of the biofuel. In India we have the National Biofuel Policy, released in 2018 by Rajasthan government. So there are 4 stages in which we can produce the biofuels. Anyone can tell me 4 stages? 4 stages of biofuel. You can use the comment section in case you want. So in 4 stages, first one is the generation number 1. In generation 1, we have the food crops, okay, food crops. In second generation, we have non-food crops. Third one is algae and fourth one is the carbon sequestration. Very good, Parisma, okay. So GBA, Global Biofuel Alliance, is the program of, or it was launched by G20, UNCTAD, WEF or G7. So answer would be G20. Fine. Now African Union, where is the headquarter? Addis Ababa, Ethiopia. Okay. And then G20. Member countries of G20. Member countries of G20 are important. You can just look from here. Recall it in case you don't know, so please try to memorize it. G20 countries. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Mexico, Russia, Arabia, Africa, Turkey, UK, US, African Union, European Union. These countries are important. So please revise it. Okay. Now my question is, does India have a does G20 have a permanent secretariat? Yes or no? G20 का permanent headquarter है या नहीं?
नो गुड ओके सो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है डजंट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटरीट और स्टाफ नाउ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस सो बायोफ्यूल की बात हुई है तो बायोफ्यूल के बारे में इन्होंने काफी कुछ देखा यू कैन गो थ्रू इट ये वाले कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है यू शुड नो कि कॉरिडोर है वो कहाँ से पास होता है ओके सो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीस इजराइल हाइफा पोर्ट वी डिस्कस्ड यस्टरडे इन द पीएमपी क्लास सो हाइफा पोर्ट कहाँ का है हाइफा कहाँ का है इजराइल देन हतीदा सऊदी अरेबिया हगार सऊदी अरेबिया गुफाट यूए एंड देन वी हैव द इंडिया मुंबई जबाल अले UAE. So this is important. Now Brent line. Where is this line? Please explain. Brent line. Try to comment your answers. Brent line. Dividing global north and global south. Nice. Okay. Global north and global south. You can have a look from here. See, this is the global north. This one, this red part is the global north. And then we have the global south. Just remember Australia forms a part of the global north. In case they give you the option, so you should know कि कौन सा global north है, कौन सा global south है. And is Australia part of global south? No, it is not. It is not. Okay. Then we have Maharshi Initiative. This was for the millet. Just remember with the help of the single letter, it would help you to revise because they won't be asking you in detail कि ये कब साइन हुआ था, ये कहाँ पे साइन हुआ था. Rather you should know two things only. Initiative किसका है? G20 का. Maharshi में M stand. M किसके लिए stand करता है? Millet. That is it. इसके अलावा you need not to know anything. Okay. Then here you can read something about BIMSTEC. अब BIMSTEC की कंट्रीज बताओ आप मुझे, फिर हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है. BIMSTEC, कंट्रीज ऑफ द BIMSTEC, मेंबर कंट्रीज. Yeah, member countries of BIMSTEC. So, first of all, it has 7 members. BIMSTEC. Okay. So, first of all, let us have a look here. Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, and India itself. Okay. So, we have discussed it. Current members, 7 members are there. Founding members and all those things are not at all important in detail. You can definitely skip it, or if you wish you can revise. Right? Then we have the ASEAN. Now ASEAN was formed because of the Bangkok Declaration. Member countries of ASEAN given here. Now if I say India is a member of ASEAN, true or false? ASEAN, India is a member of ASEAN. True or false? First, other one, please type your answers, else there is no purpose of tuning into the session. Is it a member or not? Zaya says no, false. Okay, good. So India is not a member. Now dialogue partners and member countries are given over here. And this is a PYQ of 2018. Hence it is important to revise it. It is important. Yes, revise it. Member countries of ASEAN. And to ease your preparation, there are some of the maps added already by the authority. So they have added it for you. You can definitely utilize these maps and flow charts or diagrams or whatever given over in the booklet. You can use it. Okay, so that it helps you to revise the things clearly and smoothly. Okay. Then East Asia Summit. East Asia Summit में India is here. Just remember. We saw recently that India was not a member of ASEAN, but yes, East Asia Summit का member है. Now comes the BRICS.
BRICS. So first of all, we should know the old and new member of the BRICS. So anyone can please tell me the members of BRICS. Zaya, would you mind writing the old members as well? Old members. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Good. It forms the BRICS. And now comes the new members. And those new members are Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi, UAE. And these are the new members. Alright. Now, how you can remember these new countries? So if any one of you have made any mnemonic or something, you can definitely drop it for the, for others assistance as well. But if possible, try to remember it. Okay. Johannesburg Second Declaration talks about the viewpoint of the BRICS. Fine. And the new members are UAE, Saudi, Iran, Ethiopia, Egypt. Like anyway, you can remember it. Okay. US. Okay. Headquarter of NDB. Where is the headquarters of NDB? Shanghai. Okay, so headquarters of NDB is Shanghai. And where is the headquarters of BRICS? Latest edition in SCO. Latest edition in SCO. Which country is the latest member of SCO? Which country is the latest member of SCO, Shanghai Cooperation Organization? Iran is the latest country, okay, SCO. Now, secure, SCCUR is important, connectivity, utility, so unity, territorial integrity, and then New Delhi Declaration. Then Iran is the latest member of the grouping, and then we have the headquarter Beijing, China. Then there is one more thing associated with it, is the RATS mechanism. Where is the headquarter of RATS mechanism? We have discussed already. RATS mechanism. Tashkent. Okay, Tashkent. Okay, RATS, yeah, Tashkent, given over here already. Fine. Now we have ADB. So ADB launched a country partnership strategy. This is important. Now, what is the agenda? So structural transformation, job creation, climate, economic exclusiveness. These are some of the top points which you have to remember. Okay. Then ADB. Where is the headquarter of ADB? Tell me. Headquarter of ADB.
नो, बीजिंग नहीं है, जिया गलत है। मनीला, या ओके, मनीला करेक्ट। सो हेडक्वार्टर्ड एट मनीला, फिलीपींस। In this one is important. Okay, I don't know like no why I have highlighted this. It is not important. ये बहुत अच्छा है और याद भी रखना जरूरी है। एंड ऑल्सो इसको याद रखना इजी है, जरूरी तो है नहीं है, अलग बात है, लेकिन इजी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाइन। Then we have this IPEF. This is something new, so you can go through it. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Now, what it has to do? So, see, first of all, इसकी जो मीटिंग है कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए. You need not to remember कहाँ पे मीटिंग्स होती है, ठीक है? Now, genesis and purpose is important. Genesis and purpose is important. Partners are not required to join all four pillars. Okay, like no, they can join any one pillar possible. So need not to join all pillars. That's it. Now comes the IMO, International Maritime Organization. Now, since maritime is the keyword here, you have to remember. So remember one thing, since it is talking about the maritime, it would include everything from the perspective of the blue economy. Okay, like blue ocean या जितना भी आपका water aquatic system है वो सारा maritime में include होगा. Now, what are the pointers here? First of all, 1948 specialized agency. Specialized agency it is. Now, including China, yes. अब ये याद मत रखना कि कितने मेंबर्स हैं इसमें, बिकॉज इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि कौन कौन थे कौन कौन नहीं, बट ये पता होना चाहिए जब ये बॉडी, क्योंकि यू आर राइटिंग द यूपीएस, नो, यूनियन स्टैंड्स फॉर इंडिया, एंड सिंस वी आर टॉकिंग फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव, वी शुड नो एटलीस्ट जिस कंट्री में हम हैं वो किसी चीज का मेंबर है या नहीं, ये चीज पता होनी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द सोलास, जिबूती एंड जेडा अमेंडमेंट। अब ये क्या, ये देख ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द सोलास कन्वेंशन। सो इट टॉक्स अबाउट द शिप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन टू इंश्योर द safety of life at sea. For example, like no, just there is one transportation from like suppose करते हैं इंडिया से ईरान तक का कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, ठीक है, अब ये सेफली जाए, ये बीच में जो दो टैंकर्स हैं कहीं पे कोलाइड ना हो जाए, कोई कोलिजन ना हो जाए, कोई ऑयल स्पिल ना हो जाए, मतलब हर चीज के वे में प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना काम है सोलास का। जिबूती के अंदर क्या, प्रिवेंट द पायरेसी। अब पायरेसी कहां पे होती है सबसे ज्यादा? अरेबियन सी में। एनीवन कैन टेल मी? अगेन ये भी डिस्कस हो चुका है, पीएमपी स्टूडेंट्स एटलीस्ट शुड रिमेंबर कहां पे था पायरेसी इश्यूज सबसे ज्यादा अरेबियन सी में, कौन से आइलैंड पे होता है? एंड इफ नॉट आइलैंड तो एटलीस्ट टेल मी द कंट्री। टेक योर टाइम बट ऑल्सो। यमन एंड सोमालिया, एंड यमन में देयर इज वन आइलैंड नेम्ड एज, दैट्स गुड, ओके, सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड कहां पे है? यमन में है, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है विद रिस्पेक्ट to the international affairs when we talk about the bilateral relations, when we talk about the piracy and all those recent issues which are blue ocean, right? Our blue ocean, that is Arabian Sea is facing the threat from. And third one is the Jeddah Amendment to the Djibouti Conduct, in which they would be ensuring what organized crime in the maritime sector को improve करना है, maritime terrorism को handle करना है, human trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, which is also called as IUU. And for this there was one committee to ensure कि ये IUU जो है illegal, unreported, unregulated fishing ना हो, उसके लिए कमिटी बनाई गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्या नाम था उसका? So
The name of the committee was Meena Kumari Committee. Good. Okay, Meena Kumari Committee. Important hai. So just try to remember this. I hope we are clear with this. Any doubts so far? Okay. Now, okay, so we have a good speed today. We could complete almost 20 pages in less than half hour. Fine. Then comes the G7. Now, first of all, tell me the member countries of the G7 first. Well, we have discussed it in the current affairs session too. But already those students who are not the part of that can answer if you wish. G7 countries, members of the G7 countries. Or just tell me India is a member of G7 country. True or false? First. India is false. China G7 का पार्ट है या नहीं? Yes, no. Germany, France, Japan, US, Italy, China, England. Okay, Canada, it is not China. Alright? It is Canada, not China. Good. Nice, Zaya. Nice praise. Okay, alright. Let us move ahead. Now, Russia joined G7, but since it is not a part, so earlier it was called as G8, but now it is called as G7. Okay? G7. Fine. Then GCC. अब GCC के कोई भी मुझे member countries बता सकता है? GCC, Gulf Cooperation Council. Anyone can tell me the member countries of GCC? Let me type it here for you. GCC. So, okay, yeah, please write. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi, UAE. Okay. Good. Zia, nice. Anyone else? Okay, now if I say Iraq is a member country of GCC too. True, false? Nice. Okay. ठीक है, सही है. Good. So Iraq, even Iran is not. See, how you can remember. Actually, में ये जो highlight यहाँ पे दिए गए हैं, इसके पीछे एक reason है. Prelims 2015 में ये question आया था, ठीक है? Which one of the following countries is not a member country of the? Can you please mute yourself? Okay, let me do it. It's fine. So I was saying that. Yeah, so UPSC prelims mein there was a question that which one of the following countries is not a member country of the GCC. So in that Iraq was given over there. So just remember, no, Iraq is not a member. And also just remember, जहाँ पे Saudi Arabia होगा वहाँ पे Iraq नहीं होगा. ठीक है? जहाँ पे सऊदी अरेबिया होगा वहां पे इराक नहीं होगा. ये भी एक अच्छा क्लिक था सॉल्व करने का. इन केस यू आर एबल टू डू इट तो ठीक है, फिर आपको कंट्रीज याद रखनी होगी. ठीक है, बट ये कुछ वेज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कि अगर सऊदी है तो इराक नहीं हो सकता, इराक है तो, बिकॉज दोनों में राइवल कंट्रीज है. तो राइवल कंट्रीज है तो डेफिनेटली दोनों में है ना एक एडजस्टमेंट, एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, तो दोनों एक जगह एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते. ठीक है. So headquartered at Riyadh, Saudi. And now we have member countries which we have seen already. And then comes the Iran and Iraq, not the member. No. Fine. Now if I say Iraq is the member country of, Iraq is the country which borders the Caspian Sea. True or false? Iraq borders the Caspian Sea. Yes or no? So
Everyone says no, no. Okay, good. And now if I say Iraq, Iran, it is fine. Now if I say Azerbaijan borders the Caspian Sea, true or false? ट्रू. ओके सो ओके अब जो कैस्पियन सी कंट्रीज की कैस्पियन सी की जो भी कंट्रीज है प्लीज ड्रॉप इट. ठीक है, उनमें से दो हमें मिल गई है कि अजरबैजान है, ईरान है. तो रेस्ट जो भी कंट्रीज है प्लीज लिस्ट देम एज वेल. सिंस वी नो ईरान एंड अजरबैजान है, तो अब और कितनी कंट्रीज बचती हैं, प्लीज लिस्ट देम. ओके गुड. ठीक है, TRIK is all what you can remember. 9 someone. ठीक है, सही है, गुड. चलिए आगे. एवरीथिंग इज गुड सो फार. जस्ट ड्रॉप यस अगर अभी तक फाइन है, सो दैट वी कैन मूव अहेड. कोई डाउट है प्लीज सर. All right. Now comes the NATO. So first of all, latest countries of NATO. Latest. Okay, Sweden and Finland. Now see, ठीक है, वैसे there you have answered Sweden and Finland. तो क्योंकि UPSC they won't be asking you in this way कि which are the latest country, but suppose if it is a state PCS, ठीक है, so if I ask you the latest, it is only Sweden. Are you getting my point? वहां पे दोनों ऑप्शंस होते, तो फिर आप कौन सा लगाते? ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट केस स्वीडन वुड बी द करेक्ट आंसर. वी नो दैट, है ना. स्टेट पीसीएस में दे आस्क इन सच अ ट्रिवियल वे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट दे वांट टू आस्क. क्लियर? सो नो ज़िया, 31st इज फिनलैंड, 32nd इज स्वीडन. ओके, take care of this point. Now let us move ahead. So NATO, first of all, 19 Brussels Belgium, that's it. Baki you can ignore. And in broad way you can just remember that as of now 32 members are there. Okay, 32 members are there. Then FATF. FATF. So headquarter of FATF, please tell me. Headquarter of FATF. It is Paris, France. Fine. So Paris, and then mutual evaluation is in depth countries report analyzing the implementation and effectiveness of what to combat the money laundering and terror financing. Now is mentioned in GS3, so it means it is important from मेंस पर्सपेक्टिव. इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ व्हाट इज एफएटीएफ? सो एफएटीएफ इज एन एनजीओ. ट्रू और फॉल्स? क्या एफएटीएफ एक एनजीओ है? ट्रू. Not. Why? So because it is intergovernmental body. We know the objective, so we'll not go into that. Is India a member? Yes. Is India a member? Yes. Okay. Now comes the Interpol. Interpol में सबसे important होता है red notice. The most crucial notice of the Interpol is the red
notice, and rest of the notices you can have a look, but they are not critical. So notice बहुत important, that for person. And then headquarter of the ICOR program and seven global policies goal. This ICOR is important. Now what they would be doing is they would be just creating the intelligence team to deal with issues. Okay. Now Interpol की report a global crime trends report, which is not at all important. Macolin Convention is important. It will curb the competition, manipulation, establishment of the national platform as they outlined by Macolin Convention. Macolin is important. Now Indian Ocean Rim Indian Ocean Rim Association. So first of all, Indian Ocean Rim Association का मतलब क्या, जो भी कंट्रीज आपके इंडियन ओशन में, ठीक है, सी लाइक दिस, फाइन, जो इंडियन ओशन में है. अब इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं तो यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर कि एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडियन ओशन का पार्ट होते हुए भी नहीं है. अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंट्रीज आपको दिख रही है कि जो इंडियन ओशन में तो है लेकिन IORA का पार्ट नहीं है. लेट अस सी आप कितने ध्यान से देख पाते हैं. सो लाइक नो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहां से देखते चलो, आपको दिख जाएगी वो कंट्रीज जो पार्ट नहीं है. सबसे पहले तो ये कौन सी कंट्री है, ये वाली, दिस वन, पाकिस्तान. ठीक है, अब यहां पे चलते हैं, इंडिया आ गया. अब इंडिया के ये इस साइड कौन सी कंट्री है, ये वाली, विच इज नॉट अ पार्ट. Let me use the different ink so that you can see clearly. This one I'm talking. This. Pakistan and Myanmar. Fine. ये फैक्ट आज तक कितने लोगों ने ध्यान से देखा हुआ था, ये बताओ मुझे. जया, ये पहले से आपको पता था? Just tell me so that I can understand कि ये चीजें अगर आप इतने ध्यान से देखते हो या नहीं. पता था ये पहले से आप लोगों को? इस वे में आप मैप देखें, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लगेगा. अब आपको बिल्कुल भी ना लिखना, क्रैम करने की जरूरत नहीं, कौन सी थी कौन सी नहीं. हमने इसको 2 मिनट दे दिए कम से. नाउ वी हैव द IORA के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर गवर्नमेंटल है. यस. कब बनी? 97 में. क्यों बनी? इंडियन ओशन की प्रोटेक्शन के लिए. कंट्रीज कौन कौन सी है? 23, इंक्लूडिंग इंडिया बट एक्सक्लूडिंग पाक एंड म्यांमार. ठीक है, इन्होंने दिया नहीं है बट हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी और कौन सी नहीं. इवन अगर आप येलो को काउंट करने बैठेंगे तो आई गेस ये 23 काउंट होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे. फिपिक तो क्योंकि फिपिक के अंदर पैसिफिक आइलैंड आता है तो ये पैसिफिक आइलैंड की बात करेगा. जैसे ये IORA की बात करता था वैसे ये पैसिफिक की बात करेगा. तो एक और दिमाग लगाना है, अगर IORA में बोला जाए इंडियन ओशन के अंदर कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी मान लो तंजानिया क्या सॉरी लीबिया, ठीक है, कि लीबिया पार्ट है, तो लीबिया पार्ट नहीं होगा ना, लीबिया काफी अंदर इंटीरियर में रह जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं. जब आप पैसिफिक की कर रहे हैं तो कोई कंट्री बहुत सारे यहाँ की बता दे तो वो नहीं होगी, डेफिनेटली वो एक पार्ट नहीं होगी. ठीक है. नाउ EEF, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. अब ये EEF मतलब फार ईस्ट रशिया, यानी ये इंडिया, ये मंगोलिया आ गया, चाइना आ गया, एंड सॉरी यहां पे रशिया की बात हो रही है. ठीक है, जब भी फार ईस्ट की बात हो ना, फार ईस्ट इज देयर एनी कीवर्ड वी कैन सी, फार ईस्ट, यस दिस वन. जब भी फार ईस्ट की बात होती है याद रखना वो रशिया के लिए वर्ड यूज होता है. ठीक है, फार ईस्ट रशिया, एंड ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है दैट इज ऑल अबाउट रशिया. ओके, ब्लू पैसिफिक वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट. G77 इज अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. G24 भी आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है, बस थोड़ा एजेंडा ध्यान रख सकते हैं कि डेवलपमेंट बैंक स्पेस का
फोकस है, रेस्ट इसका और कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। देन कम्स द I2U2, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये I2U2 जो बना है ये कंट्रीज से ही बना है, जैसे इंडिया हो गया तो I, देन सेकेंड I इजराइल के लिए, देन थर्ड I जो है वो थर्ड U जो है वो UAE के लिए, ठीक है। और जो फोर्थ U है इसमें जो U2 है तो फोर्थ है US के लिए। तो इजराइल, इंडिया, UAE एंड US, I2U2। एंड ये जो अनाउंस हुआ है, it has been announced to space-based tool for policymaker institutions and entrepreneurs. Okay, now, okay, member countries तो हमने डिस्कस कर ली है। अब्राहम एकर्ड्स जो हुए थे इजराइल और UAE के बीच में फॉर व्हाट? मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब है ऑकस। अब ऑकस इज अ मेंस क्वेश्चन एज वेल, इट हैज बीन आस्क्ड इन मेंस वंस, सो इट मीन्स ऑकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो ऑकस में सबसे पहले अगेन ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं इसी से आपको सॉल्व करने से, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। जैसे कि I2U2 था इंडिया, इजराइल, UAE, US, वैसे ही ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। सो ये तीन कंट्रीज का ग्रुप है। किस लिए? डीप स्पेस एडवांस्ड रडार कैपेबिलिटी, मतलब साइंस का डोमेन है। द डोमेन बेसिकली डील्स विद द साइंस, स्पेस। It was launched in 2021 and it talks about the security and defense interest. Now IAEA is a PYQ of 2018 and 2019 consecutive years में आया था ये, hence this one is important again. So in IAEA, first of all IAEA के अंदर वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है ये, for what? For cooperation in the nuclear field. Is India a member? Yes. Is India a member? Yes. To verify that nuclear materials are used solely for the peaceful purpose, मतलब किसी और पर्पस के लिए नहीं, उनका पर्पस खाली पीसफुल होना चाहिए। That is why IAEA has developed a system called as safeguard agreements. Now what they can do, they can ask you key safeguard mechanism is related to what? First of all, UNICEF, IAEA, FATF, Interpol. So answer would be IAEA. Now in that, what this safeguard agreement implies? इसका मतलब क्या है? So it means what? That that weapons can be used for the peaceful purpose only. It is also called as additional protocol. They have not written it, but it's all right. Additional, इसको additional protocol भी बोलते हैं, ठीक है? Additional protocol. All right, additional protocol. Now organization for migration, तो नाम से ही समझ आना चाहिए that कि it would be talking about the migratories. Okay, it would be talking about that, and then migrant workers are there, and IOM was established in 1951. How many members are there? Not needed. Is India a member? Is India a member? Yes, it is. Then comes the OPEC. OPEC में just remember कि अंगोला ने अभी withdraw कर लिया. That's it. West Brent crude से क्वेश्चन आया था, West Texas. Anyone can tell me what is West Texas Intermediate? Let me see how many of you have analyzed the PYQs. कितनों को याद है? West Texas Intermediate. Okay, so Brent crude. Brent crude. This is something you have to remember. And yes, most of you have answered. Good. Nice. All right. Okay, fine. Then इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बट
मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, जिसकी ज्यादा मेंबर कंट्रीज होती है ना उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कौन सी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक देखा था IORA, ठीक है। अब IORA में भी डेफिनेटली लोग यूपीएससी नहीं पूछेगा कितनी मेंबर कंट्रीज है, बट व्हाट दे कैन शूट की इज म्यांमार अ मेंबर, इज पाकिस्तान अ मेंबर। सो व्हेन द यूपीएससी इज आस्किंग लाइक नो कि जैसे ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, वी नो कि इसमें कम कंट्रीज मेंबर्स है, बट व्हेन इट इज 20, 23, 40, 45 इतने कंट्रीज एक्चुअली में याद नहीं रख सकते, तो इट वुड बी बेटर कि आप उसके आसपास का ध्यान रखिए कौन सी कंट्री पार्ट नहीं, इट वुड बी इजी टू रिमेंबर। फाइन, now OPEC we are done with, and then comes the legal methodology. Again, it is not important, you can skip it. Paris Club is important. Okay, so Sri Lanka, which is agreement with India, Paris Club on debt treatment. So what is Paris Club? वी नीड नॉट टू नो कि ये कैसे ओरिजिनेट होता है, इसका क्या टास्क है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो पेरिस के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए हैज टेकन सम मनी फ्रॉम द बी, नाउ बी इज द क्रेडिटर हियर, ए इज द डेटर, यहाँ पे बी क्या है, क्रेडिटर है। तो अब वहां पे बी जैसे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, आई रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द मंथली करंट अफेयर्स एज वेल। ओके, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था एक लंबा एग्जांपल देके जिसमें लाइक नो दो क्रेडिटर एंड डेटर्स आते हो, देन जो बी हु इज अ क्रेडिटर विल like no go and take the confirmation from other creditors, then together will make a group and then they will find a sustainable way in which debtors can pay their money back without creating any hassle, means hassle free agreement it would be. India and China is not a member. Okay, this is something you have to remember. Tax inspectors without borders. Okay, now what you have to remember key initiative किसका, OECD and UNDP. OECD and UNDP, that is it. Okay, from tomorrow might be we would be starting from here, but today we completed 30 pages in less than 1 hour. Fine, I guess 30 pages 40 minutes में हो चुके. Okay, so I guess like no, this is the best way to revise the entire thing. Okay, last question which I would like to ask you is the BEPS. Anyone can explain me what is BEPS? Who is the monitoring body and what is the purpose of this BEPS? Base erosion and profit sharing. Yeah, that's correct. Anyone can explain me the like no the extract, what it means, how you can erode the base and how you can shift the profit? Tell me, because BEPS तो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो अब इस बार वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, लाइक नो डेप्थ में इस पे क्वेश्चन हो सकता है या ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं. सो इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन मी कि क्या होता है बीपीएस, देन डू वन थिंग, आज पढ़ के आना, कल डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है. बाय शिफ्टिंग द प्रॉफिट टू अदर टैक्स हेवन कंट्रीज, एग्जैक्टली करेक्ट अमन, यही मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन भी किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो बेसिक वाज मॉनिटर्ड बाय ओईसीडी, एग्जैक्टली ओईसीडी का ये प्रोग्राम है, ठीक है, ओईसीडी. तभी देखो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स भी ओईसीडी का ही है. दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक, you have to establish the linkages between different things. Fine, okay, and we are done with the 30 pages. Congratulations. अब कितने 60 पेजेस बचे हैं वो कल हो जाएंगे, ठीक है. 60 में से एटलीस्ट ट्राई कि यू रीड द 30 पेजेस. फाइन, even if there would be one student or two students, the session would be there. So that depends upon you how much you remember. तभी you can like no utilize the efforts, वरना याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा. तो you can definitely do in this way. All right, okay. So let us meet tomorrow, and please tell me how was the session, so that if anything is there which I need to incorporate, I'll remember.
Is there anything new we can incorporate? You can definitely recommend me. Yeah, tell me if there is anything. All right. Okay. Now, no constructive criticism is there. All organization asked by UPSC. स्नेहा आई डिस्कस्ड इट माइट बी फिर आपने लेट ज्वाइन किया होगा वो डिस्कस हो चुका है वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी yes all organizations we have discussed for that you can watch the session once again or however you want it okay you can go through the PDF as well if you don't watch the session okay whatever deems appropriate you can do in that way. I don't have any issues all right okay then let us meet tomorrow but if anything is there please let me know okay so that we can take care of that in next session and for next session let me tell you here itself see we have completed so far 30 pages yeah till here we have done so tomorrow what we would do we would first revise entire these 30 pages we would be revising uske baad mein 32 67 how many pages you people can read tell me how many pages you people can read क्योंकि मुझे लगा था 30 हो जाएंगे आपसे तो मैंने 30 लिया था और मुझे लग भी गया कि 1 घंटे से कम में 30 पेजेस हो गए हैं ठीक है बिकॉज अगर सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एग्जाम में वो आना भी नहीं है तो आप मुझे बताओ कितने पेजेस आप लोग पढ़ सकते हो जितने आप बोलेंगे उतना कल को कल के लिए एलोकेट किए जा सकते हैं बट प्लीज 30 to 50 तो एटलीस्ट होने चाहिए 30 पेजेस तो होने ही चाहिए बाकी आप बताओ कैसे करना है 50 pages okay ठीक है तो फिर tomorrow please try to complete from these places in news till this just hold right try to complete till here fine like 84 तक जितने हो पाएगा अच्छी बात है स्टार्ट यहां से करना ठीक है स्टार्टिंग से करना पीछे से मत आना फाइन सो स्टार्ट फ्रॉम हियर ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू पीपल कैन डू फाइन बट एटलीस्ट 30 से लेके कम से कम यहां तक तो होना ही चाहिए 70 71 यहां तक तो करना ही है 84 या यहां तक हो जाए तो क्या नहीं ठीक है ओके एंड डजंट मैटर कोई बात नहीं कुछ पेंडिंग भी होगा तो हम अगले दिन देख लेंगे उससे फाइन दैट डजंट क्रिएट एनी इशू विद मी okay take care let us meet tomorrow have a nice day